Suppose U is the power set of the set S. See, set S दिया हुआ है 1 2 3 4 5 and 6 and U is the power set. Power set means set of all subset of set S. इसमें कितना 2 की पावर 6 एलिमेंट्स होगा क्योंकि S में contains 6 elements. Now further given that let mod D denote the number of elements in T and T dash is the complement of T. Mod T is the cardinality, that is number of element in set T, and T dash is the complement of T, where T belongs to U. T belongs to U means T is subset of S and T belongs to U. Since U contains a set of all subset of S, therefore T is also a subset of S. Now for any T comma R, T slash R is the set of all elements in T which are not in R. It means that if T is equal to 1 comma 2 and R is equal to 3 4 5, then T slash R will be 1 2. That is सेट टी का वो सारा एलिमेंट्स जो टी में है लेकिन आर में नहीं होना चाहिए, इसलिए टी स्लैश आर विल बी 1 2. 1 भी टी में है लेकिन आर में नहीं है, 2 भी टी में है आर में नहीं है. नाउ वी विल चेक फर्स्ट ऑप्शन. फॉर एनी सेट एक्स बिलोंगिंग टू यू, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट. देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से. Suppose x is equal to 1 comma 2, cardinality of x will be S, that is 1 2 3 4 5 6 minus x, which will be equal to 3 4 5 6. So cardinality of x dash हो गया 4 and cardinality of x हो गया only 2 element 2, which is not equal, so option A is wrong. There exists a set X and there exists a set Y, both belongs to U, that is power set of S, such that cardinality of X is also 5 and cardinality of Y is also 5. Then X intersection Y is 5. See, suppose that for option B, if X is equal to 1 2 3 4 5, it is given that cardinality of x is equal to 5, so I have taken x from 1 to 5. Now if you take y is equal to 6, if we add any more element from set S, it will be also available in set X, so x intersection y will never be equal to 5. यहाँ दिया हुआ है कि x इंटरसेक्शन y 5 होना चाहिए. अगर 5 एलिमेंट हम पहले से ले लें तो छठा एलिमेंट तो यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट जब भी हम y का लिखेंगे वो x से ज़रूर मैच करेगा एंड x इंटरसेक्शन y 5 कभी नहीं होगा. दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग. नाउ वी विल चेक ऑप्शन सी. सी सेज दैट फॉर एवरी set X belonging to U and every set Y belonging to U, X and Y are the subset of S. So for any two set X, Y that is subset of S, if cardinality of X is equal to 2 and cardinality of Y is equal to 3, then X dash Y is equal to 5. See, suppose that X is equal to 1 comma 2 and y is equal to 3 comma 4 comma 5, then cardinality of x is 2 here, no problem. Cardinality of y is equal to 3 here, also no issue. Now when you will go to calculate x dash y, that is set of all element of x which is not in y, one belonging to x is not present in y
I will write here 2 belongs to x and which is not present in y. I will write here. Now see, x dash y is not equal to 5. x dash y का कार्डिनलिटी निकालेंगे तो ये 2 निकला जो कि 5 के बराबर नहीं है जो ऑप्शन में दिया हुआ है. हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, बी इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ लेट्स चेक डी. डी कह रहा है फॉर एनी टू सेट x, y belonging to set u, that is power set of S, x slash y is equal to y dash slash x slash. Suppose that x is equal to 1, 2, y is equal to 3, 4, 5. Then x dash will be 3, 4, 5 and y dash will be here it will be 6 because S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y dash will be, it is 3, 4, 5, so y dash will be 1, 2 and 6. Y dash by x dash will be equal to 6 is present in x dash, therefore we will not include 6. 2 is present in y dash but not present in here, so it will contain 2. 1 is present in y dash but it is absent in x dash, therefore 1 will be here. फिर से यहाँ देखेंगे x by y, 2 जो है x में प्रेजेंट है लेकिन y में प्रेजेंट नहीं है इसलिए इस सेट में आएगा. 1 जो है x में प्रेजेंट है लेकिन y में नहीं है इसलिए यहाँ पे आएगा बिकॉज x डैश y मीन्स सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ x विच इज़ प्रेजेंट इन x बट नॉट इन y. यहाँ से हम लोग देख सकते हैं s डैश y इक्वल टू y डैश x दोनों बराबर है. हेंस ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट.